Hello, little scholars. Welcome to your social science class with your teacher, Aprajita. And children, let's start a new chapter of History, class 7th today. That is chapter number 11. Independent states in 18th century. 18th century में कौन-कौन से independent states थे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So here we start the chapter, and before we start, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Later Mughals, new political formations. So we'll read these two topics here. The Mughal Empire faced a number of crises towards the end of the 17th century. अब 17th century के end तक, end आते आते जब 17th century का end होने लगा था, तो मुगल एम्पायर ने बहुत सारे क्राइसिस फेस. India saw the emergence of many independent kingdoms in the 18th century. और 18th century के start होते ही बहुत सारे independent kingdoms जो थे वो उभर के आए. The Mughal dynasty continued to linger on, but the kings neither had power nor territory. जो मुगल डायनेस्टी थी वो चल तो रही थी, लेकिन उनके रूलर्स के पास ना तो द किंग्स जो थे उनके पास ना तो कोई पावर थी और ना ही उनकी कोई टेरिटरी. Later Mughals. After Aurangzeb's death in 1707, a war of succession began in which his eldest son came to the throne by the name of Bahadur Shah. अब औरंगजेब की डेथ के बाद जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन की, उसके बाद कौन थ्रोन पे बैठेगा वो शुरू हो गया, वो वॉर शुरू हो गया. और उसमें कौन जीता? औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था बहादुर शाह. He ruled only for 4 years and was succeeded by जहांगीर शाह who ruled only for 1 year. अब बहादुर शाह ने कितने साल के लिए रूल किया? 4 years तक रूल किया. उसके बाद कौन आया? जहांगीर शाह, और उसने केवल 1 year रूल. He was followed by Farrukhsiyar and then by Muhammad Shah. और उसके बाद एक के बाद एक आते गए. The last Mughal ruler was Bahadur Shah Zafar when the Mughal rule was formally ended in 1857. और 1857 में जो लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, उसके बाद मुगल रूल का एंड. They paid little attention to the welfare of the people, development of trade and agriculture or maintenance of the army. ये जो लेटर मुगल्स थे, इन लोगों ने वेलफेयर, जो लोगों का वेलफेयर था उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बहुत कम ध्यान दिया. डेवलपमेंट, ट्रेड का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर या मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया. The nobles who served them were selfish and worked more for harming the empire than to do any good to it. और जो नोबेल्स थे, किंग्स के जो नोबेल्स थे, उन्होंने वो बहुत सेल्फिश थे, वो केवल अपने लिए काम करते थे और एम्पायर को नुकसान पहुंचाते. Causes of decline of Mughal Empire. मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ? उसके क्या कॉजेस थे, क्या रीजंस थे? The rule of the Mughals witnessed a downfall due to wrong policies of Aurangzeb. औरंगजेब की गलत पॉलिसीज के कारण जो मुगल रूल था उसका डाउनफॉल. He prejudiced against the Hindus in many ways. He destroyed their temples. उसने हिंदूज के ऊपर बहुत अत्याचार किए, उनके temples destroy किए, forced them to convert to Islam, taxed them heavily with jizya, जिसे poll tax भी कहते हैं, and put severe restrictions on their trade and agriculture. There was no clear law of succession, so whenever a ruler died, a war of succession took place in which many worthy princes were killed. अब कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं था कि एक रूलर की डेथ के बाद, एक किंग की डेथ के बाद कौन थ्रोन पे बैठेगा. तो उसके न चलते हुए क्या होता था, जब भी कोई रूलर, किसी रूलर की डेथ होती थी, उसके बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाता था कि कौन बैठेगा थ्रोन पे. और उसमें क्या होता था, जो बहुत सारे योग्य प्रिंस भी होते थे वो भी मारे जाते. Invasions from the northwest also proved an important cause for the decline of the Mughals. Nadir Shah's invasion during the rule of Muhammad Shah spelt doom.
He plundered India and took away a large booty from here. अब जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो उसने उस टाइम पे कौन था रूल कौन कर रहा था? मोहम्मद शाह। उसने नादिर शाह ने इंडिया को तहस नहस कर दिया और यहाँ से लूट के ले गया बहुत सारा वेल्थ, including the Kohinoor and the Peacock Throne in 1739. और 1739 में वो यहाँ से कोहिनूर हीरा लेके चला गया नादिर शाह, और पीकॉक थ्रोन जो था इंडिया का वो भी ले गया. These invasions continued which drained the wealth and strength of India. और ये invasions चलते रहे जिस कारण इंडिया का जो सारा वेल्थ था वो भी चला गया और स्ट्रेंथ भी कम होती चली गई. नादिर शाह's invasions were succeeded by those of अहमद शाह अब्दाली. और नादिर शाह के इन्वेजन के बाद किसका इन्वेजन शुरू हुआ? अहमद शाह अब्दाली. He was defeated by the Mughals, but he continued to raid India and occupy some provinces. मुगल्स ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली कंटिन्यूसली रेड करता गया इंडिया पे और ऑक्यूपाई करता गया कुछ प्रोविंसेस. The Afghan forces defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat in 1761. 1761 में अफगान फोर्सेस ने मराठास को डिफीट कर दिया. However, the Afghans could not occupy Lahore from the Sikhs. लेकिन अफगान्स जो है वो लाहौर नहीं ले पाए सिख्स से. The Mughal Empire was very fast. The later Mughal could not control such a vast empire. और जो मुगल एम्पायर था बहुत बड़ा था. जो लेटर मुगल्स आए, जो बाद में जो मुगल्स आए, मुगल रूलर्स, वो इसको नहीं संभाल पाए इतने बड़े एम्पायर. Some of the successors were reckless drinkers, while the others were fond of women. Deterioration of character of the rulers expedited the disintegration of the Mughal Empire. Hot climate, abundance of wealth and comforts deteriorated the standards of Mughal army. अब मुगल आर्मी की कंडीशन धीरे धीरे डाउन क्यों होती गई? क्योंकि क्लाइमेट बहुत हॉट था, वेल्थ कम था, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, कंफर्ट्स नहीं थे उनके पास, इसलिए मुगल आर्मी डिक्लाइन होती चली. The soldiers became easygoing. They began to avoid the hardships of battle. बैटलफील्ड में जाके जो हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था सोल्जर्स को, वो उससे बचने लगे. There was no proper system of education. Lack of proper training resulted in the evolving of rulers. The Muslim administration became corrupt. The Muslim administration was corrupt. Look children, here is Aurangzeb and these are the Harappan toys. Now, the emergence of Maratha power, the Sikhs and Rajputs continued the downfall of the Mughal rule. अब मराठास का जो इमर्जेंस है और मराठा पावर का जब पावर में आए, जब मराठास पावर में आए, वो प्लस द सिख एंड राजपूत कंट्रीब्यूट, सिख और राजपूत इनके कारण भी मुगल्स का डाउनफॉल, डिक्लाइन एम्पायर. द एडवेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द वीकनेसेस ऑफ मुस्लिम रूलर्स एनेबल्ड द ब्रिटिश टू सीज द कंट्रोल ऑफ द कंट्री. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जो मुस्लिम रूलर्स, जो वीक मुस्लिम रूलर्स थे, उनसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को अपने कंट्रोल में कर. Now, fact to know, the Kohinoor is a diamond. अब कोहिनूर क्या है? ये कोहिनूर हीरा कैसा है? कोहिनूर is a diamond which is now in possession of the British. ब्रिटिश के पास है कोहिनूर हीरा. The peacock throne was a fine throne studded with precious gems on which Jahangir sat in his court. जहांगीर अपने कोर्ट में उस पीकॉक थ्रोन पे बैठते थे और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए. New political formations. The period from the beginning of the 18th century saw the rise of several regional powers. अब जो पीरियड आया beginning of 18th century, वहां से बहुत सारे regional powers emergence में आए, such as Sikhs, Rajputs, Marathas, Nizam of Awadh and Bengal, Nizam of Hyderabad, Jats and Satnamas. They tried to expand their area of influence. और ये सब several जो regional powers emergence में आए, इन्होंने अपना area of influence जो है expand करने की कोशिश. Mysore was a powerful state.
It rose to prominence with Hyder Ali. और मैसूर और भी ऊपर उठा किससे? हैदर अली के। He was energetic, intelligent and determined. He modernized his army with the help of the French. French की help से उसने अपनी army को modernize किया. He fought many battles with the Maratha Sardars, Nizams and English. हैदर अली ने बहुत सारे युद्ध लड़े, किसके साथ? मराठा सरदार्स के साथ, निजाम्स के साथ और इंग्लिश के साथ. He even defeated the English in the first Anglo-Mysore War in 1769. 1769 में जो first Anglo-Mysore War हुआ था, उसमें हैदर अली ने इंग्लिश को डिफीट किया. He died in the second Anglo-Mysore War in 1782. और 1782 में जब second Anglo-Mysore War हुआ तो उसमें हैदर अली की डेथ. Hyder Ali was succeeded by Tipu Sultan, his son. See, this is Hyder Ali and this is Tipu Sultan. So, Tipu Sultan was Hyder Ali's son. He introduced new calendar, new system of coinage, new system of weights and measures, etc. Tipu Sultan ने बहुत सारी नई चीजें टीपू सुल्तान लाया, जैसे नया कैलेंडर and coinage system भी new था. And the weights and measures system was also new. He took interest in books, especially history and science. Tipu Sultan को history और science की books में बहुत interest था. He took steps to improve the economic conditions of his subjects. His innovations in weapons were quite amazing for his enemies. और टीपू सुल्तान ने अपने weapons में भी बहुत सारे नए innovations किए. He had to fight continuously with the English. और ब्रिटिश के साथ कंटिन्यूअसली वॉर होती रहती थी. Finally, he died in the fourth Anglo-Mysore War at Seringapatam in 1799. 1799 में टीपू सुल्तान lost his life. He died at Seringapatam. So it was the fourth Anglo-Mysore War when Tipu Sultan died. Now, fact to know, Tipu Sultan was famous for his bravery. Tipu Sultan was very brave, बहुत brave था टीपू सुल्तान. He was known as the Tiger of Mysore. टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? टीपू सुल्तान was known as the Tiger of Mysore. Now let's read about Bengal. The Nawabs of Bengal were efficient rulers. जो बंगाल के नवाब थे वो बहुत efficient rulers थे, योग्य rulers थे. They rose to eminence when the Mughal Empire declined. और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये एमिनेंस में आए. At the death of Aurangzeb, the governor of Bengal, Murshid Quli Khan, made Bengal independent. और औरंगजेब के डेथ के बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित किया. His successors were efficient and took measures for the welfare of the people. मुर्शिद कुली खान के जो सक्सेसर्स थे वो एफिशिएंट थे, योग्य थे और वो लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखते. Trade flourished under them. They brought many more areas under cultivation by clearing forests. However, they did not build forts and strengthen the army. लेकिन जो सक्सेसर्स थे मुर्शिद कुली खान के, उन्होंने कोई फोर्ट्स नहीं बनवाए थे और आर्मी को भी स्ट्रेंथन नहीं किया. Due to this, they could not suppress the influence of the English. और इसी कारण वो इंग्लिश के इन्फ्लुएंस को सप्रेस दबा नहीं पाए. And were defeated by the English in the Battle of Plassey in 1756-57. 1756-57 में Battle of Plassey हुआ, उसमें मुर्शिद कुली खान के सक्सेसर्स जो थे वो हार गए. This laid the foundation of the English rule in India. और इसके बाद English rule का foundation ले हुआ इंडिया. अवध. Sadat Khan was appointed as the governor of Awadh in 1722. 1722 में सादत खान को governor of Awadh बनाया गया. He entered into a fresh revenue settlement with them in 1723. This improved the condition of the peasants from the oppression of the zamindars. और जो peasants का condition था वो improve हुआ क्योंकि वो पहले जमींदार के अंडर में थे. He worked for the welfare of the people. सादत खान ने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया. His successor was Safdar Jung, his nephew.
सदत खान का जो भतीजा था सफदर जंग, वो उसका सक्सेसर बना. He was also an able ruler who patronized art, literature and architecture. He ruled up to 1754 and brought peace to the state. सफदर जंग ने 1754 तक रूल किया, राज्य किया और स्टेट में शांति की स्थापना. Jats. Let's read about the Jats. The Jats were chiefly peasants who lived in Delhi, Agra and Mathura on both sides of the Yamuna river. जाट कौन थे? वो मेनली peasants थे जो कि दिल्ली, मथुरा, आगरा और यमुना के दोनों साइड्स पे रहते. When the revenue was increased from 1/3 to 1/2 during Aurangzeb's rule, they revolted under the leadership of Gokula. अब जब रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया, 1/3 से हाफ कर दिया गया औरंगजेब के रूल के टाइम, तो उन्होंने रिवोल्ट किया. जाट्स ने रिवोल्ट किया. किसके लीडरशिप में? गोकुला के लीडरशिप. The Jats continued to rise repeatedly. After the death of Aurangzeb, they established an independent state of Bharatpur under the command of Badan Singh and Churaman. अब औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ भरतपुर स्टैब्लिश किया. किसके कमांड में? बदन सिंह और चूड़ामन. The Jat state reached its glory under Surajpur. The special feature of the Jat state was that whenever the state was at war, the peasants too picked up arms and fought by the side of the regular army. एक जाट स्टेट का एक स्पेशल फीचर ये था कि जब भी कोई लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो आर्मी के साथ साथ, रेगुलर आर्मी तो लड़ती ही थी, उसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे वो भी वेपन्स उठा लेते. However, after his death, this state declined and broke up into a number of small lands controlled by the zamindars. Fine, children? Now, the Rajputs. The Rajputs both fought and befriended the Mughals since the beginning. However, Aurangzeb stopped promoting them, so they turned against the Mughals. अब राजपूत जो थे वो लड़ते भी थे मुगल्स के साथ और befriend भी कर दिया था मुगल्स को शुरू में, लेकिन औरंगजेब ने उनको प्रमोट करना बंद कर दिया था, इसलिए वो मुगल्स के अगेंस्ट हो गए थे राजपूत. When the Mughal Empire became weak under Aurangzeb, many independent states were established in Rajasthan. अब जब मुगल एम्पायर औरंगजेब के एम्पायर रूल के टाइम पे वीक होने शुरू हो गई थी, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी स्टैब्लिश हो गए. कहाँ? राजस्थान में. सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बे रूल्ड फ्रॉम 1699 to 1743. He was an able administrator and a great warrior. वो क्या था? एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और एक बहुत अच्छा वॉरियर. He also took interest in social reform and scientific learning. He ordered to cut down expenditure on weddings so that the evil of female infanticide could be eradicated. सवाई राजा जय सिंह ने वेडिंग्स पे जो एक्सपेंडिचर होते थे, जो खर्चे होते थे, एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, उनको कट डाउन करने का ऑर्डर दिया. He also built up astronomical observatories. Astronomical observatories भी बनवाई सवाई राजा जय सिंह ने. कहाँ? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर एंड बनारस. He founded the city of Jaipur. City of Jaipur को किसने फाइंड आउट किया था? सवाई राजा जय सिंह. Now let's read about the Sikhs. The Sikhism started as a spiritual cult under Guru Nanak. However, it became a strong political and military force by the time of Guru Gobind Singh. अब जो सिखिज्म स्टार्ट हुआ एक स्पिरिचुअल कल्ट की तरह, वो गुरु नानक देव के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बन गया बाय द टाइम गुरु गोबिंद सिंह के. द 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh was the 10th Sikh Guru, 1664 to 1708. After Guru Gobind Singh, Banda Bahadur rose as the leader of the Sikhs. और गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बहादुर Sikhs के गुरु बने. He struggled against the Mughals. The Sikhs brought the Punjab and Jammu under their control. और Sikhs ने क्या किया? पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में ले लिया.
They organized themselves into 12 missiles and confederacies. 12 missiles or confederacies. Maharaja Ranjit Singh brought all these missiles together and became a formidable power in the Punjab west of the river Satluj. महाराजा रंजीत सिंह इन सभी 12 मिसिल्स को वो एक साथ उन्होंने एक जगह पे लाए. He commanded a very strong and disciplined army. महाराजा रंजीत सिंह ने कमांड एक बहुत ही strong और disciplined army. His officers and soldiers included both Hindus and Muslims. He built the Golden Temple at Amritsar. महाराजा रंजीत सिंह built the Golden Temple, जो Golden Temple है अमृतसर में, वो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया. The other Sikh states were Nabha, Kapurthala and Patiala. ये बाकी और Sikh states. See, Guru Gobind Singh, the 10th Guru of Sikhs. Satnamis. The Satnamis were traders and peasants who lived in and around Narnaul. जो सतनामीज थे वो क्या थे? ट्रेडर्स और पीजेंट्स थे जो कि किसके आसपास रहते थे? नरनाउल. Now in Mahendranagar district of Haryana. They wore saffron clothes. वो saffron कलर के कपड़े पहनते थे. They revolted against the Mughals when one of their followers was killed by the Mughal soldier. जब सतनामीज का एक फॉलोअर मुगल्स ने मारा था तो उसका उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया? मुगल्स के अगेंस्ट. They fought almost without any weaponry and caused a lot of damage to the Mughals in 1672. और 1672 में उन्होंने without any weapons, कोई भी weapons नहीं थे उनके पास, वो मुगल्स के अगेंस्ट लड़े और उनको बहुत डैमेज हुई. Now children, let's read about the Marathas. Of all the regional political formations, the Marathas were the most influential. जितने भी regional political formations हुए उसमें से जो मराठास थे वो सबसे ज्यादा influential. They sustained opposition to the Mughals started with Chhatrapati Shivaji 1627 to 1680. और उनका जो sustained opposition to the Mughals था वो कब शुरू हुआ? छत्रपति शिवाजी के साथ. He formed his small army with a band of men and trained them in guerrilla tactics. और छत्रपति शिवाजी ने एक छोटी सी आर्मी बनाई जिसमें कि men थे. It was a band of men और उनको ट्रेन किया किस टैक्टिक्स के तरह? गुरिल्ला टैक्टिक्स. He declared himself the emperor of the Maratha state in 1674. और शिवाजी ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया मराठा स्टेट का कब? 1674 and assumed the title of Chhatrapati. शिवाजी was succeeded by his son Sambhaji. और शिवाजी के बाद कौन आए? उनके बेटे संभाजी. पेशवास. The Peshwas were the Brahmin ministers of the Marathas. अब पेशवास कौन थे? वो मराठास के जो ब्राह्मण मिनिस्टर्स थे वो थे पेशवास. They ruled from 1713 to 1761 with their capital at Pune, now Pune. अब उसे पुणे कहा जाता है. In 1713, Balaji Vishwanath was appointed the Peshwa by the Maratha ruler. और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को मराठा रूलर्स ने as Peshwa अपॉइंट किया. Soon he concentrated all power in his hand. He was succeeded by Baji Rao I. बालाजी विश्वनाथ को किससे सक्सीड किया? बाजी राव I and then बालाजी बाजी राव. The Peshwas were very clever tacticians. बहुत clever tacticians थे Peshwas. The Maratha Empire expanded from 1720 to 1761. और ये जो मराठा एम्पायर एक्सपैंड किया कहाँ से कब तक? 1720 to 1761. They brought Bihar, Odisha, Delhi and parts of Punjab under their control. पेशवाज ने बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और parts of Punjab को अपने कंट्रोल में लिया. They also captured territories from Mysore and Hyderabad. मैसूर और हैदराबाद से भी उन्होंने कुछ territories captured. The Marathas had immense resources at their disposal, but at the same time they created many enemies for themselves. अब
ये जो मराठास थे इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन साथ ही साथ उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे. This was the reason that no other state helped them when they fought with Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761. और यही कारण था कि किसी भी दूसरे स्टेट ने उनकी हेल्प नहीं की जब उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा. They were defeated in this battle. अब मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था इस बैटल. रूल ऑफ मराठास अंडर पेशवा. जिस टाइम पे जो रूल था मराठास का पेशवास के अंदर में, उस टाइम का इंडिया. एडमिनिस्ट्रेशन. The Marathas were efficient administrators. The ruler was the head of the army. जो मराठास थे वो बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो रूलर था वो आर्मी का हेड होता था. एंड आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. He enjoyed absolute powers. He ruled with the help of अष्टप्रधान. और ये जो रूलर है ये रूल करता था किसके हेल्प से? अष्टप्रधान. और क्या होते थे ये अष्टप्रधान? कौन थे? A council of 8 ministers. अष्ट का मतलब होता है 8, तो अष्टप्रधान का मतलब काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स. द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वर द पेशवा और द प्राइम मिनिस्टर. जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे वो पेशवा या प्राइम मिनिस्टर. द सेनापति और द आर्मी कमांडर. सेनापति को आर्मी कमांडर भी कहा जाता था, पेशवा को प्राइम मिनिस्टर कहते थे. पंडित राव और चीफ प्रीस्ट. ऑल मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड soldiers were appointed on merit. Merit के basis पे इनको appoint किया जाता था. They were given salaries in cash और cash में salaries मिलती थी. The kingdom was divided into प्रांत और states. States में divided था जिसे कि प्रांत कहा है. Further divided into परगनास. अब ये प्रांत जो थे वो परगनास में divided थे और या district कहते थे उसे, and villages. The Patel और village headmen looked after the village administration. और village administration की देखभाल कौन करता था? पटेल या जिसे कहते हैं village headman. They delegated powers to the Maratha chiefs to raise armies such as the Scindia of Gwalior, Gaikwad of Baroda and Bhosle of Nagpur, who accounted for the development of their areas. Now comes the trade and agriculture. The Marathas encouraged trade and agriculture. ये सब हम मराठा रूल के टाइम का पढ़ रहे हैं. तो मराठास के टाइम पे जो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर था उसको मराठास ने बहुत एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था. They levied taxes but looked after well the people who obeyed them. जो लोग उनका कहना मानते थे उनकी वो बहुत अच्छे से देखभाल करते थे. This was the reason that trade expanded in the entire region under their control. Revenue. The Marathas levied 2/5 of land revenue from the territory directly under their control. जो territories directly उनके control में थे वहाँ से वो land revenue का 2/5. The other important sources of revenue was chauth. एक और important source जो revenue का था वो था chauth. It was 1/4 of the land revenue charged from the people outside the territories not under their control. और ये 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो चार्ज किया जाता था लोगों से जो कि आउटसाइड द टेरिटरीज थे, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं थे, मराठास के कंट्रोल में नहीं थे. इट वाज चार्ज्ड ऑन द प्रॉमिस दैट दे वुड नॉट अटैक देम. अनदर सोर्स ऑफ इनकम वाज सरदेशमुखी. एक और सोर्स ऑफ इनकम था जिसे कहा जाता था सरदेशमुखी, which was charged from other king on the promise of assistance in the time of emergency and protection from other states. अब ये जो सरदेशमुखी है ये चार्ज किया जाता था दूसरे राजाओं से एक प्रॉमिस के साथ कि जिस टाइम भी उनको इमरजेंसी के टाइम प्रोटेक्शन की जरूरत होगी वो देंगे. It was 1/10 of the revenue charged by the rule. Next is the army. The Marathas looked after the army well. Marathas अपनी आर्मी की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे. They maintained artillery and cavalry besides infantry. They also had a small navy. उनका एक small छोटा सा एक navy का भी पार्ट. They paid attention for the advancement of tactics. They paid attention to the forts which were well fortified. Shivaji had over
250 forts under his control. वो टैक्टिक्स के एडवांसमेंट पे भी ध्यान देते थे और फोर्ट्स पे भी ध्यान देते थे। शिवाजी के पास 250 फोर्ट्स मींस किला, 250 किले थे शिवाजी के कंट्रोल। So children, let's just revise what we have just read in the chapter. अभी क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, important facts को पढ़ते हैं। After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire began to decline. औरंगजेब के डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है उसका डाउनफॉल होने लगा, वो डिक्लाइन होने लगा। Religious discrimination, wars of succession and invasions weakened the Mughals. मुगल्स के वीक होने के ये कारण। The state of Mysore flourished under Hyder Ali and Tipu Sultan. Bengal was ruled well by the Nawabs until their defeat at the hands of British in 1756. Awadh, Bharatpur, Amber and Sikhs were regional political formations with limited area of influence. The Satnamis were a small group of peasants and traders who fought with the Mughals. The Marathas offered stiff resistance to the Mughals and were eventually successful in carving out a large empire under the leadership of Chhatrapati Shivaji. The Marathas expanded their area of influence under Shivaji and Peshwas until they were finally defeated by the Afghans in 1761. Marathas ने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया किसके अंडर, शिवाजी और पेशवास के अंडर, जब तक कि वो फाइनली अफगान से डिफीट हुई। The Marathas had an efficient revenue and army administration. Fine children, आया समझ में आपको ये चैप्टर? तो आइए करते हैं अब इसके एक्सरसाइज। So now children, let's do the exercises. Objective type questions. First, take the right option. सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ, कौन सा सिटी फाइंड आउट किया था सवाई राजा जय सिंह ने? मथुरा, बनारस, जयपुर। He founded Jaipur. Dash united the 12 missiles in Punjab. Guru Gobind Singh, Banda Bahadur, Maharaja Ranjit Singh. महाराजा रंजीत सिंह ने 12 missiles पंजाब में यूनाइट की। Dash of Amber erected observatories at Jaipur, Delhi and Ujjain. Badan Singh, Savai Raja Jai Singh, Surajmal. किसने बनवाए थे observatories? Savai Raja Jai Singh. The Marathas encouraged agriculture, trade, both of these. Marathas ने क्या encourage किया था? Agriculture भी encourage किया था, trade भी encourage किया था. So we take both of these. The Marathas charged chauth from, किससे लेते थे चौथ मराठास? People inside the territories, people outside the territories, both of them. They charged chauth from people outside the territories. So take, now match the following. Let's match it. Jizya. What is jizya? Jizya is a tax imposed on non-Muslim during pilgrimage. Later Mughals. Later Mughals कब आए थे? The Mughal rulers after Aurangzeb. Female infanticide means killing of girl child. Missile. What is a missile? It is a confederacy or province under the Sikhs. Match it with E. Guerrilla tactics. क्या है ये guerrilla tactics? The soldiers who do not fight a direct battle but sneak attack. Sardeshmukhi. Sardeshmukhi, 1/10 of land revenue charged by Marathas from their rulers on the promise of assistance. Sardeshmukhi to A. Fine children, आया समझ में आपको? So stay tuned for the new video. जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. Till then, keep learning, अच्छे से पढ़िएगा and stay blessed, stay happy. Bye.